माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, papers to be laid on the table. Sri Ravi Shankar Prasad. Sir, I beg to lay the paper mentioned against my name at serial number 1 in today's revised list of business. Sri Sripada Yeso Nayak. On behalf of my senior colleague Sri Jagat Prasad Nadda, I beg to lay on the table of the House the paper mentioned against his name as serial number 2 of today's revised list of business. Sri Santosh Kumar Gangwar. सर, आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित विवरण को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। Sri Sripada Yeso Nayak. Sir, I beg to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 of the today's revised list of business. Sri Mohan Bhai Kundaria. सभा पटल पर रखे जाने वाले कागज के संबंध में आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5(1) से 5(2) तक उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। Sri Hansraj Gangaram Hakir. सर, मैं आज की संशोधित सूची के क्रम में संख्या 6 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने की आग्रह करता हूं। Sri Manoj Sinha. Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Dr. Sanjeev Kumar Balian. I beg to lay the paper on the table listed against my name at serial number 8 in today's revised list of business of us. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Sri Ahmad Hassan. No, Hassan Naye. Srimati Vijaya Satya. Yes. Satyanath. I beg to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2014 and 15. The first one is 7th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in 39th report of the committee on the subject implementation of schemes for welfare of senior citizens pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment. And the 8th report on action, 8th report, 9th report and the 10th report. Thank you very I lay much. on the table. Now, statement by Minister today, Sri Ravi Shankar Prasad. No. Statement regarding government business, Sri Mukhtar Abbas Naqvi. महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सोमवार 16 मार्च 2015 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिए जाएंगे। आज की कार्यसूची में से बकाया सरकारी कार्य की किसी मसले पर विचार, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और लौटाना। वर्ष 2015-16 के लिए लेखा अनुदानों की मांगें रेल और वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें रेल। वर्ष 2015-16 के लिए बजट सामान्य पर सामान्य चर्चा। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और लौटाना। वर्ष 2015-16 के लिए लेखा अनुदानों की मांग सामान्य, वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की पूरक मांगें। लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर और विचार करना पारित। कंपनी संशोधन विधेयक 2015, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014, भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्था में उचित प्रकार और पारदर्शिता का अधिकार संशोधन अध्यादेश 2014 का अध्यादेश संख्या 9 का निरूपोदन कर चाहने वाले संविधान संकल्प पर चर्चा तथा लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार संशोधन विधेयक 2015 पर विचार और पारित करना। राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में निरसर संशोधन विधेयक 2014 पर विचार और पारित करना। Thank you. Now, matter is raised with the permission of the chair. 0 hour. Yes. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जम्मू कश्मीर हमारे देश का सर का ताज और हर भारतीय को ये गौरव होता है कि ये ताज हर सूरत में बना रहे,
चाहे देश को, देशवासियों को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को या जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी भी कुर्बानी देना हो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर भारत का, हमारे देश का ताज बना रहे। जब कभी भी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को या पाक ऑक्युपाइड हिस्से को किसी भी विदेशी मैगजीन ने छापा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हमारी सरकार हो, इनकी सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या आरएसएस, सबसे ज्यादा शोर उसमें आरएसएस और बीजेपी ने उठाया। हमने भी उठाया है, सभी पार्टीज ने उठाया है। लेकिन ये क्या वजह है कि पहली दफा जो बीजेपी आरएसएस की यहां सरकार बनी है, उसके चलते आप बताइए आरएसएस वाले कौन नहीं है यहां, तो मैं बता दूंगा नहीं है, एक भी नहीं है आरएसएस वाला। अच्छा ही, बहुत अच्छा हो गया। तो चलो देश को मान ले, चलो देश को तो ये मालूम हो गया। अब आज के बाद अगर कोई परेड में शामिल होगा तो हम पूछेंगे कि आप वहां परेड में कैसे डंडा लेकर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, जब आरएसएस में नहीं है। चलो, मदर ऑर्गेनाइजेशन तो है, मदर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शर्म की बात नहीं है। उस दिन वेंकैया जी के घर पे सब लोग खड़े थे। बहुत मैं बात आपसे बिल्कुल, मैंने कभी भी ये नहीं बताया कि बीजेपी के लिए आरएसएस अनटचेबल, मैंने ये कभी नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। इसलिए तो आपने कहा कि बीजेपी को गौरव है कि हम आरएसएस के हैं, तो इसलिए तो मैंने बीजेपी आरएसएस बताया। इसमें कोई आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है आप हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आरएसएस का जो माउथ पीस है, ऑर्गेनाइजर रहा है, अरे आपका माउथ पीस आरएसएस का है। पहली दफा उसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, और ये कल से टेलीविजन में चल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा, और आपके ऑनलाइन में तो अभी कल तक था, कल से ऑनलाइन ने निकाल दिया। रात को भी टेलीविजन पे चल रहे थे, कई चैनल्स पे, सुबह से चल रहा है। तो मैं इस सरकार से पूछना हूं कि आरएसएस के माउथ पीस ऑर्गेनाइजर ने जो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग करती है, उसको मानती है? क्योंकि इनका माउथ पीस है। Okay. Now, Sri Ravish, now please, Tarun, sit down. Sri, now, 1 second. I am allowing Sri Ravi Shankar Prasad to make the statement. You do that. You want to react also? Sri Ravi Shankar Prasad, allowed him. सर, Sri Ravi Shankar Prasad, sit down. सर, जो सम्माननीय विपक्ष के नेता ने कहा है, सर, Now please, your minister is there. जो सम्माननीय विपक्ष के नेता ने कहा है, मैं बहुत जुमारी से कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा। संसद का एक रेजोल्यूशन भी है, हम सभी उससे मदे हुए हैं। ऑर्गेनाइजर के जिस लेख की बात कही गई है, उसकी तहकीकात हम करेंगे। ये न संघ का व्यू है, न भाजपा का व्यू है, न हम कार्यकर्ताओं का व्यू है, न सरकार का व्यू है। Now you can lay your statement. I am allowing you to lay the statement. Sir, Sri Ravi Shankar Prasad. I make a statement regarding the status of implementation of recommendations. No, I am not allowing. Third report of the Departmental Standing Committee on IT, sir. Okay. What more you want? The minister has very categorically said the reply. Sit down. You want again to say something more? Sit down. Hey, your own minister has said. Now 0 hour. No, 0 hour. Not on that issue. That issue is over. Yes. I am not allowing, no. What is? Yes. There is you are on a suspension notice.
that is, no. Mr. Chaturvedi ji. No. I am not allowing. No, I am not allowing. Because the minister has made it very clear that J&K is part of India. It will be part of our country. Nobody can change it. What more you want? You sit down. No, minister has made it very clear. Sit down. No. See. No. I have not. Chaturvedi ji, I have not allowed you. करके आप एक तरफ नहीं कर सकते कि रविशंकर प्रसाद जी ने एक जवाब दे दिया कि हम इसे मंजूर नहीं करते। सत्यव्रत चतुर्वेदी, now please, Satyavrata Chaturvedi, you know meaning of Satyavrata? Satya means truth, Vrata means you are sticking to that. So remember that Satyavrata Chaturvedi, minister has said it categorically. He made it categorically clear. What more you want? He said कि जो छपा है उसको हमारा व्यू नहीं है, हम उसको मंजूर नहीं करते। सवाल ये नहीं, मैं सवाल दूसरा उठा रहा हूँ कि जो छपा है अगर आप नोटिस है तो मानते हैं, नोटिस है तो छापने वाला व्यक्ति you give notice, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? You give notice, ये give notice, let him give notice. Let the government come forward. They are going to take action against that. Okay, let them give notice. That is his demand. Let them give no. That the government come forward. Then Mr. Satyavrata Chaturvedi, if you have an additional point over what has been said, give a notice. I am asking you, give a notice. Sit down. I am asking you to give notice. Sit down. I am not allowing. No. 0 आवर के लिए नोटिस दे सकते हैं। Okay. Now, let me go to. Okay. Yours is 267. No, I am allowing Rajiv. It is a suspension notice. Let me listen. Sir. No. Please. Sir, under rule, Wait. If no, Tiwari, wait. Now listen. P. Rajiv has given notice for under 2, that has precedence. Let me deal with that. What is? Then I will call you. Then what is your notice? Myself and What is? Balagopal. Why your own party man creating a problem? Sir, we have submitted the notice under Rule 267. That's what I am allowing you. Sir, What is the point? The most corrupted government in the country, the state government, which is trying to defeat the second UPA government in Kerala, actually No. trying to utilize the budget as a No, you weapon can't allow all for this. I am not corruption, allowing sir. all this. Sir, I am not there is a allowing. notice, sir. I am There is not a notice, allowing. sir. There is a I am not notice. allowing this. Sir, No. Sir, our I am not notice is allowing there. this. Some No. women MLAs were manhandled in the assembly. No. Some women MLAs were No, manhandled in the what assembly. happened in the, see, what happened in an assembly, whether Kerala or any other assembly, you cannot raise it, But we budget cannot is a, discuss budget it. is a constitutional No, I am provision, not sir. allowing it. Budget is a constitutional provision. Budget is a constitutional provision. Yes. The government tried to make this as a new avenue for corruption. No, please. Budget is That's a what I am constitutional saying. provision. I don't know. Budget See, is a constitutional I don't know who provision. has objected the placing of the budget. Sir. I don't know who has objected. please listen, You sir. cannot raise it. Please If listen, somebody sir. has done it, Budget is a. Yeah. Sir, please listen. Please. Budget is a No, not constitutional allowed. provision. The Not government- allowed. of the assemblies and Not working allowed. of the government in this I am house, not in allowing. this August House. Sir, we No, cannot. I am not allowing. Sir, we cannot discuss the working of the assembly I am and not the allowing. government in this August House. Pardon? We cannot discuss the working of the assembly Yeah. I am and not the allowing. governments and state It government. is in not this house. allowed. It is ruled out. Your suspension notice is ruled out. I am not allowing. We cannot discuss the proceedings of an assembly here.
whether Kerala or any other assembly. I am going to the next subject. Now, Rajiv, you know the rules. Sit down. You know the rule. No. Is it? Where is the notice? Let me see. Where is that notice? Rajiv, you sit down. Rajiv, I'll call you. Rajiv, you sit down. No, that you see you let your people raise it in the assembly, not here. You conduct that assembly next time and go to that assembly and raise it there, not here. Not here. The notice is from Balgopal. You should have told. It is Balgopal notice. You said it is your notice. No. Okay. Anyhow, I am not allowing. I am not allowing. Yes, Mr. Tiwari, what is your point of order? Mumbai हमले Sir, tell me what is your point of order? Sir, I will tell you. Sir, Mumbai हमले में 450 लोग मारे गए. If a criminal incident takes place inside the country, then the legal case should be in the country, inside the country, in the boundary of the Indian subcontinent. Lakhvi is arrested there in Pakistan. He has been released on bail, and this is the complete What is the failure. point of order? Sir, I'm telling you the point of order. Point of order. Listen, I'm telling you the point of order should be some violation of rule here. You are speaking of Pakistan. Sir, I'm give coming, notice then. Sir, I'm coming to the Give point of order. notice. Give notice. Sir, give notice. Sir, Please sir, give I'm telling notice you the on number, that. Sir. I'm telling you the number. Tiwari. Sir. Take out the book. Tiwari. Sir. No, Tiwari ji, point of order should be some violation of rule in this house. You are saying something what happened in Pakistan. No, sir. No, I have no nothing. problem. No. Give notice. No, sir. I am telling Sir, you give sir, notice. अगर It will be देश के considered. हित से जुड़ा हुआ है, देश के हित से जुड़ा हुआ है, एक आतंकवादी, please. इनकी विदेश No. का फेलियर सर. Sri A.U. Singdev, 0 over. Sri A.U. Singdev, 0 over. I have already disallowed it. I have already disallowed. That I disallowed. I know. No, what? No. I am not allowing anything. No suspension notice is being allowed today. No. What is this notice? Arey, you give notice. Why don't you give notice? No, I can't do that. Mr. Rajiv, Mr. Balgopal, I have seen your notice. I am disallowing it. The same matter was raised here. I am disallowing it. No, sir, only one Sri A.U. notice, sir. Singdev, Sir, 0 only over one Sri notice. A.U. Singdev. No point over I am allowing. Why? Under what rule? You quote me the rule. You know the rules. Give me book. Quote me the rule. Sir. You know the rule. You are minister. Tell me. Under what rule? Sir, Tell me rule. it's What rule is violated here? Tell me. sir, sir, I am not allowing you. as Mr. Naresh Agrawal pointed out, that it's not necessary to give notice in 0 hour. Why I am saying, today at 10 o'clock, Lakhvi has been granted bail. How can we give notice? So I told him to give notice for today, tomorrow. There is anything which is very important, it cannot be raised in the house, because notice has to be given by 10 o'clock. Mr. If this issue is important, he has been granted Mr. at 10 o'clock. Rajiv today. Shukla. How can I give the notice? Rajiv Shukla, I told him to give notice for the next day. No, next day matter will be. Next day. Nothing will happen. Then matter will be. And Today under 0 hour he cannot say that. I asked him It's to a give matter notice. of national importance. Then I will consider. can we- Go and see there. If he has been granted bail today after 10 How can you o'clock, raise it how under can we point raise of it order? tomorrow? We'll have to How can you raise it under point of order?
I am calling those people. Sit down. Go and sit. Yeah. All notices allowed, I will read out. All notices allowed, I will read out. So yes. And then I will read out. I will call when the chain comes. Sit down. No. See, why you are trying to increase my blood pressure? Why you are doing that? See, I am only saying, Mr. Tiwari, I am only, Tiwari ji, no, sit down. I am only saying that, no, sit down. That's what I am saying. I am only saying that this issue cannot be raised as a point of order. This should be raised. I never said it is an unimportant issue. I said only you give a notice and chairman will consider it. You will get. Notice, that is it. Repeat it for next day. Rajani Patel can repeat it for next day. Incident has taken place after 10 a.m. You can give notice. You can give notice for 0 hour or under any other rules. Give notice. Rajani Patel notice is late. You repeat your notice for next day. See, chair wants to accommodate maximum members. I am telling you. Sri A.U. Singh. That is why you raised it. You already raised it. Yeah. Tiwari has already raised it. It is on record. Mr. Tiwari, you are minister, you know all parliamentary things. Tiwari has raised and it is on record. I have not, Mr. Shukla, I have not expunged what he said. He raised it and it is already on record. I have not expunged it. So you sit down. Something happens today, suppose after 10 o'clock, how it should be raised? This is what I want to know. I am not Einstein to go back on time and do it. Sit down. Dr. Sri A.U. Singh Dev, 0 hour. Thank you, sir. Sir, I draw your attention Give notice. to the plight of migrant laborers, conditions in the country which continue to exist. Under the deception of jobs and fixed pay, these poor people are taken to work in other states, mostly made to work in brick kilns, etc. So they are subject to torture and inhumane conditions. सर मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी स्टेटों में बाढ़ आ जाती है, कभी फैमिन कंडीशंस आ जाते हैं, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए. इसके लिए, इसके रेगुलेशन के लिए कई लॉज स्टेट्स ने भी बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा लैक्स है. हम सुनते आते हैं सदियों से कि लोग चले जाते हैं दूसरे स्टेटों में, हमारे स्टेट से भी जाते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है, उनको ज़बरदस्ती की जाती है, उनसे काम लिया जाता है. ऐसा केस उड़ीसा में हुआ था जहां दयालु और नीलंबर नाम के 2 लेबर्स जिन्होंने काम करने से इनकार किया था, उनके हाथ काट दिए गए थे. इस तरह से 600, 700, 800 लोग अन्य स्टेट से रेस्क्यू होके आते हैं, पर जितने रेस्क्यू होते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा बंदी बना के रखे जाते हैं ब्रिक किल्स में, दूसरे स्टेटों में. तो ये केवल एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें अच्छी तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म रखने पड़ेंगे जिसमें ये बॉन्डेज सिचुएशंस जो हमारे स्टेट में आते हैं और अन्य स्टेट्स में आते हैं वो ना आए. मेरी एक ही सुझाव है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसमें कार्रवाई करें, अच्छे से हायर पेनल्टीज लगाएं, स्ट्रिक्ट एक्शन लें अगेंस्ट मिडलमैन एंड ब्रिक किल्न ऑपरेटर्स. और ये चलता ही रहेगा, कभी बाढ़, कभी फेमाइन,
लोग जाते ही रहेंगे, जितनी कोशिश करने से भी और स्टेटों में काम करने वास्ते, देखने वास्ते, उनके लिए स्ट्रिक्ट लीगल मैकेनिज्म और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे वो ज़बरदस्ती बांध के रखे ना जाएं। मैं अर्ज यही करूंगा कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल के इसमें अच्छी कार्रवाई करें। धन्यवाद। यस, थैंक यू श्री एम.बी. अच्युतन। यस, एसोसिएट करो, ठीक है। श्री एम एग्रीड, श्री एम.बी. अच्युतन। यस, दैट इज ऑर्डर। स्टार्ट, श्री एम.बी. अच्युतन। Thank you, sir. Yeah. I want to draw the attention of this August House on the problems faced by the NRI in Gulf countries. When we talk about NRI, we generally think that they are big guns having getting more money and so on. But vast majority of the We don't think. Vast majority of the people working in Gulf countries are poor laborers, low-income laborers, and staying in labor camps. So, but they are remitting millions of rupees to our country. The total remittance last year was 75 billion by NRIs to our country. That you can imagine the contribution of the NRI to our foreign exchange. But our government and the society as a whole is taking a negative attitude towards that. There are many problems being faced by them. I only confine to two problems. One is that rehabilitation of the people, workers coming back to India. Due to the localization policy of the Gulf countries, we cannot blame them. It is up to them to up their policy. Such problems as the Nitakat Act of Saudi Arabia, lots of people have came back, but there is no rehabilitation program for them. Yesterday I got a reply from the Honorable Minister that it is the responsibility of the state government. Central government has no concern or program for the rehabilitation. So I humbly request to the government that 1,000 crore fund must be allotted for the rehabilitation of the people coming back from Gulf Minister countries. should listen. That is one, nobody is listening. Minister should listen. One problem, because they are in distress. In Kerala government, they try to implement a program. More than 40,000 applications received, and only 200 people got the subsidy from the state government. The state government cannot bear it. It is the responsibility of the central government, because you are having this billions of dollars as foreign exchange. So you must act. Another thing is the exorbitant rate of the airfare during the season. This vacation summer vacation is coming, and the airlines, including Air India, I is myself charging commented on 3 that. or 4 times airfare. So government must instruct the Air India to reduce the exorbitant rate, and normal fare must be enforced. Okay. So this is the two important issues. If you are concerned about, every day we talk about the NRIs, their contribution to our country, but we are just neglecting. Shri So K.C. please Tyagi. take action. Yes, all the names who associate may be ordered. सर, श्री के.सी. त्यागी। डिप्टी चेयरमैन सर, आपके और चेयरमैन साहब के साथ कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की खत्म करने कि 0 आवर में जो सवाल उठाए जाते हैं, आज बुलाएगा नहीं तो कई महत्वपूर्ण मंत्रियों की अनुपस्थिति में उनके सही जवाब नहीं मिल पाते या फिर उनके लिखित जवाब नहीं मिल पाते। ऐसा ही एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। सर, एक डच कंपनी है जो सिम कार्ड बनाती है, उसका नाम है डीमार्ट। तो अमेरिका और यूरोप के मुल्कों के जो स्पाइस एजेंसीज हैं, उन्होंने डीमार्टो के डाटाबेस को हैक किया पिछले थोड़े दिन पहले, और उसके बाद अभी हमारे पीएमओ ने सिम कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। और आईबी की अलर्ट रिपोर्ट है सर, आईबी रेड फ्लैग ओवर आधार बेस्ड सिम कार्ड। सर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं इस सवाल को कि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है, जो एक्सपर्ट है इसके, मैं नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ देम, जोमैटो दुनिया की सबसे बड़ी सिम मैन्युफैक्चरर है
और इसके डाटाबेस पर एक्सेस पाने का मतलब है कि अब अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया के लोगों पर स्पाइंग कर सकेंगे। सर, ये इसका इंडिया में भी नेटवर्क मौजूद है जिमाल्टो का, और लाखों लोग इसकी सप्लाई करी गई जो सिम कार्ड है उसको यूज कर रहे हैं। यानी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा लेजिस्लेशन, द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज आल्सो, और डिफेंस के भी कई महत्वपूर्ण लोग इस समय जिमाल्टो के सिम कार्ड को प्रयोग कर रहे हैं। और सर, उन पर भी इस तरह की जासूसी नहीं हो रही होगी, इसकी संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने का यही मतलब होता है कि जासूसों को जासूसी करने के लिए खुला न्योता देना। सर, 23 सितंबर 2013, 26 नवंबर 2013, 24 मार्च 2014 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस कार्ड को अनिवार्य करने से रोका जाए। सर, आधार कार्ड के लिए जो अब नाम को अगर आप एक्सपेंज करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्री नंदन नीलकनी जी ने एक प्रस्ताव रखा था, 60,000 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हो चुका है। सर, उसका क्या उद्देश्य था? वो प्रस्ताव पत्र कहाँ है? मैं चाहता हूं एक तो वो सदन में पेश हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारे नागरिकों के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और हमारे स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑफ डिफेंस उनके आगे खोल के रख दिए जाएंगे। न केवल जासूसी, बड़ी कंपनियां आधार कार्ड से सिम कार्ड से जोड़ने के अपने फायदे के लिए सरकारी लोगों और डिफेंस पर्सनल को हैक कर सकती हैं। सर, हाल में पेट्रोलियम मंत्रालय की जासूसी और कल की कॉरपोरेट की जासूसी इसका सबूत है। सर, मेरा निवेदन आपसे यह है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मैं चाहता हूं कि सरकार के कोई जिम्मेदार मंत्री, अभी टाइम ओवर, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, टाइम ओवर। श्री दिलीप कुमार तुर्की, नॉट गोइंग, एसोसिएट, यस, टाइम खत्म हो गया। त्यागी जी, टाइम खत्म हो गया। तो क्या ना, श्री दिलीप कुमार तुर्की, यस। Give us some time to discuss this matter in the House as a short duration discussion, and I associate with him. Give notice. Yes, Sri Dilip Kumar Turki. Thank you, sir. Sir, through you, I would like to draw the attention of the House and the government to a very important issue regarding tribals. Sir, the tribals are around 9% in the population of the country. In Odisha, tribal community constitutes more than 22% of the state population. But there are no avenues for them for higher education. Till secondary ashram school do impart education to the tribal students. But after passing out from those ashram school, these talented or meritorious tribal students are forced to stop studies due to their poverty and lack of any governmental assistance. Without higher education, they are not able to get good jobs, and more of them return to their villages. Therefore, in order to bring the neglected tribal community in the mainstream, it is imperative that a branch of Central Tribal University is opened in Odisha, and free higher education is made available to the tribals. Sir, tribal youth are not only strong physically and mentally, but tribal culture is also very rich. A Central Tribal University will go a long way in harnessing the full potential of tribal community and connect them to the national mainstream. Along with this, I also demand that ashram schools should be upgraded till graduation, and their focus should also be on vocational education, so that tribal students passing out from those ashram schools do not remain jobless. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Veer Singh. माननीय उपसभापति महोदय, भारत के प्राइमरी स्कूलों की दयनीय स्थिति के संबंध में मेरा यह मुद्दा है। हमारा देश ग्रामीण अंचल में बसने वाला देश है, इसलिए देश की अधिकांश आबादी को शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम केवल
सरकारी स्कूल ही हैं। महोदय, देश में प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। देश में लगभग 13 लाख स्कूल हैं, जिसमें लगभग 23 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादातर गरीब परिवारों के ही बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। महोदय, इन स्कूलों में विशेष ग्रामीण अंचल में लगभग 2.6 लाख स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, लगभग 4 लाख स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, लगभग 6 लाख स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। महोदय, आज सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं, किंतु उन प्राइवेट स्कूलों में गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनकी इतनी फीस होती है प्राइवेट स्कूलों की, जिसको गरीब लोग उस फीस को वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए आज जितने भी हमारे देश में प्राइमरी स्कूल हैं, आज एक अभिशाप जैसा बनकर रह गए हैं। आज उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसकी नौकरी लग सकती है, ना कहीं वो ऐसा एग्जाम पास कर सकता है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, ना तो उन विद्यालयों में अध्यापक होते हैं, ना बच्चे होते हैं, और ना कोई सुविधा होती है। बैठने के लिए फर्श भी नहीं होता है। यहाँ तक कि प्राइमरी के बच्चों को बैठने के लिए घर से अपना कोई ना कोई कपड़ा या टाट की पट्टी ले जानी पड़ती है। ऐसी दयनीय हालत आज हमारे देश के प्राइमरी स्कूलों की है। इसके साथ साथ जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम आता है, चाहे जनगणना का हो, पल्स पोलियो का हो, चुनाव का हो, तो सभी जगह प्राइमरी टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। जब उनकी ड्यूटी उधर लगती है तो स्कूलों में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा बाधित होती है। जब उनकी शिक्षा बाधित होती है तो मैं चाहूंगा कि ये सरकारी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम चलें, किंतु इनके लिए सरकार, प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकार अलग से व्यवस्था करे। मान्यवर, अंत में मैं टाइम ओवर श्री डी राजा, टाइम ओवर, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। वीर सिंह, रिकॉर्ड में नहीं आते, बोलने के क्या फायदा है? बैठिए, बैठिए वीर सिंह, रिकॉर्ड में नहीं आते, बैठिए। 3 मिनट में बोलने के लिए प्रिपेयर करना है। श्री डी राजा। Sir, I stand to raise an issue which has paramount public importance. Great historians like Romola Thapar have expressed their serious concern at this issue. It is not an issue pertaining to one state. It is not an issue pertaining to one political party. It is not an issue pertaining to one state government. It is an issue pertaining to the whole nation. Sir, recently... What it stands for, I don't know even now. The right-wing extremist forces have become very aggressive and offensive. They are attacking the freedom of expression, freedom of creation, freedom of media in the country. And we know the grave experience of Maharashtra. Dr. Dabalkar was murdered. So far, nobody has been arrested. Communist leader Gobind Pansare was shot. He died. So far, no arrest has been made. What is your subject? Now, recently... What is your subject? I am coming. Recently, that's what I am explaining the problem, sir. It's a serious issue and it pertains to you and me and everybody. And the right-wing political certain extremist forces which claim... What your it stands for, I don't know even now. No, the issue... You are saying it. No. What is that it for? Tell me. That issue is, I explained, the right-wing extremist forces are launching attack on freedom of expression. Recently, there was a bomb attack on a media house in Tamil Nadu. Okay. Pudiya Talamera TV channel.
No, let him. Not against you. No, no. It is not against you. It is not against you. Navanitha Krishnan, it is not against you. What happened? What is the problem? Raja, you continue. Sir, You can say. Sir, It is not. sir, there was an attack. Navadip, I want you sit down. You sit down. Sir, Navadip Krishnan, if anything is there against you or against the state government, I will expunge. Has taken prompt You listen. You can understand English. If anything he says against you or against the state government, I will expunge it. Sit down. I will go through and expunge. Sit down. No. Listen. Yeah. Listen. That is generally issue he is Let me saying. finish. He Listen. never said anything against state government. Karpaya. He has not said anything against the state government. Listen. Sit down. Listen. Yeah. Kanimani, you sit down. Why do you want to create problem? You have joined that party. No, Sit down. Listen. Sit down. Sir, Yes. Sir, it See, is- don't make any aspersion against the state government or any individual. I didn't say. What Say. are you talking? I You didn't- say your piece, Baba. No, the point is. Sit down. It's not allowed. Sit down. अरे चले why you are interviewing? Sir, What is your... Now, see, Honorable Navanitha Krishnan, I am not I am saying- requesting you, if there is anything against you or the state government, I will expunge it. You sit down. You sit down. Now, finish karo. Sir, it is a fact. Some bombs were thrown at a media Finish in channel. one more minute. Media channel in Tamil Nadu. I will go through it. No. Don't worry. Pudiya Talamurai television channel. I understand the state government has acted promptly, arresting 6 persons. 6 persons. But Now Kanimani has objection. I believe no. no, but it is not a. Sit down. Sir, it is not an isolated Yeah, case yeah, in yeah. Tamil Nadu. Earlier there was an attack on a writer. And in Agani he declared he would not write further. Such is the attack on the freedom of expression. Now you conclude. And in such a That's okay. situation, no right-wing force Yeah. can claim monopoly Yeah. of representing See, Hindu religion. yes, In the it's name a of general Hindutva, issue. all these No, right-wing see, forces sit down. Sit become down. so Now you sit down. aggressive and offensive. Now over, you It sit down should now. be condemned. Now you sit down, it's your That's what over. I'm saying. Now listen, no. It's a general issue. No, the Tapan Sen. No, it's a general. No, you allow me, sit down. D. Raja took so much time to come to the I issue. understood that. And now, it is a general issue, attack on the freedom of press and media, that everybody condemns. It is not a matter of state matter. Yeah. Now, Sri Motilal Vora. Now I understood. Yeah. What do you want? You want to associate? Associate with Associate with Navanitha Krishnan or associate with Raja? You tell me. Both of them I associate because Pudiya Talamurai is itself in Tamil. It is a new generation, young generation that is run by young generation. All the anchors and everybody is neutral. They come forward with a most modern method of anchoring. Therefore, we have to support their independence. Yeah, Motilal Vora ji. Vora ji, आप Deputy बोलना है, मैं क्या करूं? I am raising a very important issue, and that What issue is this? is taken by the government. It will solve the unemployment problem. The subject matter, cooking of non-vegetarian hotel management course should be optional. Various Indian universities and institutes run government-approved degrees and diploma courses in hotel management and catering.
a look at their syllabus reveals that there is a mandatory coverage of preparation of non-vegetarian food. It shall be appreciated that a substantial number of vegetarians from the Indian population can opt for this course in view of the aforesaid mandate of the learning non-vegetarian food preparation. Thus, there is a significant number of aspiring students who have missed out on the opportunity of pursuing a career in hotel management and catering for the sheer inability to take up the aforesaid course. It is imperative that such courses, whether leading to degree or diploma, should have an option of not having to take up the subject of learning preparation of non-vegetarian food. Maybe India and the world could then have the finest chef in the realm of vegetarian cuisines who are presently shying away from the course. I therefore very strongly appeal to your honor to consider this change in curriculum. Thank you very much. Chairman, sir, it will solve the number of student problem, those who are not opting for this vegetarian chef. Yeah. I hope the government will accept this thing. Okay, thank you. Sri Mansukh Mandavia. Mansukh Mandavia, those who associate with the order. Yes. Mandavia ji. DRDO हमारे देश में डिफेंस में रिसर्च करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है और DRDO के यहाँ हमारा युवा साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और पिछले 2 दशक में हमारा DRDO के माध्यम से हमारा संशोधन आगे बढ़ा है और जैसे कि धीरे धीरे हम विदेश की टेक्नोलॉजी, विदेश का आविष्कार और विदेश के अनुसंधान में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट और वहाँ के साइंटिस्ट अपने रिसर्च तो करते हैं, विश्व के साइंटिस्ट भी अपने यहाँ रिसर्च करते हैं, लेकिन जब हमारे साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च करते हैं, मैंने 2 दिन पहले इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी हुई थी, मैंने वो पढ़ी, उसमें बताया गया था कि विश्व के सभी देश में अपने अपने यहाँ डिफेंस के संदर्भ में और भी संदर्भ में रिसर्च होता रहता है और वो रिसर्च होने के बाद उनकी पेटेंट के एक सिस्टम होते हैं और पेटेंट करवा लेते हैं। हमारे यहाँ हमारा साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और रिसर्च करने के बाद जब पेटेंट की हमारी सिस्टम ऐसी है कि वो रिसर्च को पेटेंट करने में बहुत समय लगता है, शायद 10-15 साल तक पेटेंट लेने में समय लग जाता है। और वैसी तरह जो हमारे यहाँ रिसर्च हुआ है, वो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में देरी लगती है, हमारा साइंटिस्ट का मोरल डाउन होता है और वैसी विश्व में कहीं भी सिस्टम नहीं है जो विश्व में सभी जगह पे अपने अपने साइंटिस्ट अपने अपने यहाँ और उनके पेटेंट ले लेते हैं। वो 15 साल के बाद आज किया हुआ रिसर्च 15 साल के बाद जब उसको पेटेंट मिलेगी तब सभी विश्व के साइंटिस्ट ने वो पेटेंट अपने नाम पे कर ली हुई थी। जैसे कि हमारा युवा साइंटिस्ट का हौसला भी डाउन होगा, उसका हौसला बढ़ाने के लिए और उसको जो रिसर्च करता है उसको रॉयल्टी भी मिल सकती है और रॉयल्टी के आधार पर वो साइंटिस्ट हमारे यहाँ उसको महत्व भी बढ़ेगा। तो मेरी आपसे आपके माध्यम से सरकार से एक गुजारिश है कि ऐसी हमारी जो पेटेंट सिस्टम है उसमें बदल किया जाए और हमारे यहाँ जो संशोधन हुए, हमारा जो साइंटिस्ट संशोधन करे, खास के महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि ये हमारी DRDO की संस्था के माध्यम से हमारा मिलिट्री फोर्स में जो रिसर्च की गई हुई टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल अभी तो हम विश्व के और कंट्री से, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, इटली हो, अमेरिका हो, वहाँ से टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है और टेक्नोलॉजी के विकल्प में हमारे साइंटिस्ट जो इतना बड़ा काम करते हैं उसको तुरंत ही पेटेंट मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसका हौसला भी बढ़ेगा और एक करने जैसा काम है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ भी उसके पेटेंट सिस्टम में सरलीकरण किया जाए और हमारा साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया जाए। I agree with you, Minister Naqvi ji. If what he said is real, it is a serious matter that our scientists, they conduct research, they will have their findings. For getting patent, it takes years. Whereas by the time, in other countries, other scientists will get patent and our scientists will become demoralized. I would request you to take it up with the Science and Technology Minister. Definitely. Yeah, it's very serious matter. और माननीय Okay, Dr. C.P. Thakur. डिप्टी स्पीकर सर,
I am going to raise very important aspects of primary education, which is happening in our country and more marked in Bihar. There are two types of primary education system developing in all states in India, including Bihar. In one type, children of rich people are going to English medium school, which are very expensive and not affordable for the general masses. They are taught in English. In the other type, in government schools, less number of teachers, but the education is through Hindi. These two types of education are creating a big divide in the society. After matriculation, students from Hindi medium have to face difficulties in writing any competitive examination. It is because they have to compete with English medium students. Sometimes it has come to my knowledge that they know the answers but fail to understand the essence of the question and write wrong answers because the questions are in English. So this issue has been raised with me by many social organizations, intellectuals and school principals. Previously in Bihar, from very beginning, students were taught both English and Hindi. So they were good in English and Hindi both. But now they start with Hindi and after higher classes they go through English system. I like to cite earlier practice in Bihar when both Hindi and English were taught at primary level and the performance of the students was commendable. But now the practice has changed and only one language is being taught at primary level. That has had adverse impact on the career of the poor people, students from the poor community. I think creating two worlds is harmful and detrimental. It is necessary to introduce both language, Hindi and English, at primary level from very beginning all over the country. English is becoming international language. So everybody, all students, if they go out, they have to compete in English. Even the French people, previously they were very averse to speak in English, but now they speak in English because English has become an international language. So the government should take a serious note on this subject. Okay. Thank you very much, Sri Hussain Dalwai. Sri Hussain Dalwai, yes. Though all the names who associate may be added. Hussain Dalwai. Thank you, sir. महाराष्ट्र में बहुत सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पे हल्ले होने लगे हैं. अभी वहाँ के एक विधायक एनसीपी के जो मंत्री भी थे, जितेंद्र आव्हाड को मारने की धमकी दी गई है. नथुराम विचार मंच के जरिए उनको एक पत्र आया है और पत्र में उन्होंने कहा है कि दाभोलकर और पानसरे के बाद आपका नंबर है, आप ये इस तरह से हमारे खिलाफ बोलते हो वो बंद करो. इस तरह की हमेशा इस तरह की ये आते पत्र में उन्होंने लिखा है, ये पत्र नहीं है, ये प्रतिज्ञा पत्र है और हमारी नथुराम चक्र चालू है. ये महाराष्ट्र नथुराम गोडसे के विचारों का है, ऐसा उनका कहना है और ये हमारी कमिटमेंट है. इतना उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही है और एक विधायक के बारे में कही है और अभी भी कोई पकड़ा गया नहीं है. न दाभोलकर का खूनी पकड़ा गया है, न पानसरे का खूनी पकड़ा गया है. ये धमकी आई है और आह सावन के जो महाराष्ट्र के बड़े चिंतक हैं उनको भी इस तरह की धमकी आई है. इसका पुलिस ने कुछ कार्रवाई चालू की है ऐसा मैं सुनता हूं, लेकिन इस तरह का महाराष्ट्र में होने लगा है. टीवी 9 का रिपोर्टर गणेश जाधव, इसके ऊपर जालना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, सैंड माफिया के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया. ये सारा मतलब ऐसा है, सारे अटैक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके बारे में कुछ करती नहीं. मैं केंद्र सरकार को विनंती करता हूं, खास करके होम मिनिस्टर को, कि आप इसमें इंटरवीन करिए और कौन सी भी हालत में इस तरह का आदमी का विचार प्रक्रिया जो है वो बंद करने की कोशिश करने वाले लोगों को कड़े से कड़े सजा दीजिए. ये मेरी मांग है. थैंक यू. All the names may be added. Yes, all the names. Yes, Sir, I raised to
mention this house, the injustice. No, sit down, sit down, sit down. Injustice done to the Andhra Pradesh because of non-implementation of Andhra Pradesh Reorganization Act. Sir, Polavaram project, national project, capital building and other promises pertaining to Andhra Pradesh and Telangana, both the states. Sir, we have given a notice. All four of us have given a notice that this should be discussed in the short duration discussion, because the chairperson has agreed. So you have been kind enough to agree, but unfortunately yesterday's BSc, this could not be included. No, you Sir, say about Polavaram project, your demand. No, the Polavaram includes the entire package, sir. This government promised that they would implement that and release the money meant for 16,000 crores. It has to be released. So that's not the only tip of the iceberg. The entire provisions of AP Reorganization Act have to be implemented. This government lacks commitment, sir. This is where we are hurt. That's what the House should discuss. If with permission of the House, this should be included in the next week's business, sir, because it cannot be postponed, sir, because I will come separately when I discuss the budget about the provisions they have made, the meager, the tokenism they have shown. That's a different thing. On the other hand, Chief Minister of Andhra Pradesh says, my wings are cut, how can I fly? So this is an allegation against one, and the state government says center is not cooperating. Central government says the state government has not given proposals. So we are in a fix. The people of Andhra Pradesh are suffering. The people are antagonized. They are agonized. I seek the protection of the chair by including that subject, sir. Why I am saying, four of us have given in writing. You on the occasion, you said we will give time. The chairperson also said he will give time. Unfortunately, yesterday's BSc did not find place. So I urge this House to include, there is a provision with a consensus that could be included in the next week's schedule, sir. So I want you to kindly take the sense of the House and discuss the AP reorganization bill, because this government has failed. So I have 30 seconds more. I have 30 seconds more. Hold on. Hold on. So we want it. We want it to be. So you give my commitment. You have told that it will be done. I am sorry that I am insisting the chair to include this, because we have to include this, because this is the people of entire both the states, Telangana and Andhra Pradesh. They want justice. The incorporated, those provisions should be implemented as promised by the leaders, entire leaders, on 20th February 2014. So we are feeling bad, feeling sad that the commitment has not been made. So I want it to be included in the next year. So we want it to be included. Time over. Allow Sri K.N. Balgobal. No. Yes. No, Sri, please allow Sri Balgobal. Don't encroach on his time. After this. Please don't encroach on Balgobal's time. You can give notice. Animandrau, sit down. Don't you start. In the country, in the state of Kerala, Don't encroach his time. Sit there down. are some lawlessness happening in there. Balgobal, you say. Lawlessness, and recently Only what Balgobal says will go on record. Nothing else will go on record. culprit was arrested. Only what Balgobal says will go on record. Nothing else. Sit down. NIA is inquiring about him. Yes. He murdered a security guard by hitting his car. He is, and now when cases are coming, he paid. Not going on record. Sit down. To bribe to the senior. Animandrau, not going on record. Sit down. Why do you trouble him? Documents are coming out. Sit down. Now some vigilance cases against the chief minister, vigilance case against the finance minister of the country, the state of Kerala. And today, constitutionally, the budget is to be passed in the state assembly, but it was not allowed. It was not done, and without accepting any constitutional principles, the Kerala Assembly had done some serious situation. The women MLAs were manhandled by the ministers of the state. Sir, No, reference to Kerala Assembly is expunged. Whatever reference to Kerala Assembly is expunged. The unfortunate situation. Whatever reference to what happened in Kerala Assembly is expunged. That is prevailing in the state of Kerala. No, you are not allowed. You have changed the subject. No, nothing will go on record. You have changed the subject. No, whatever reference
goes to Kerala Assembly, what happened is expense. Expense. No. That is expense. Yes, it is not going, it is expense, not going on record. Time over.